Good morning, everyone. Welcome to this Multilingual Poets Meet. We will have a couple of sessions in this. So, India is a land of languages. In those languages, a number of poetry that has been written, not now, maybe for the past 2000 years or so, because some of the languages are ancient. And this combination of multilingual poetry and the high philosophical content make India a very exotic and unique place as far as poetry is concerned. So, in today's session, I request Mr. Buchung Sona to come and chair the session. She is a renowned writer, translator, and publisher. His books include Songs of the Arrow, Songs of and York Horns, notes from contemporary Tibetan writing, music, and film politics. He is also a number of compiled and edited works in his credit. Sir, it's our pleasure to have you with us today. The next is Mr. Mukul Kumar. Mr. Mukul? Okay. So next is Mr. Agni Shekhar. He's a very renowned Kashmiri scholar and he is also Indian poet. He has 8 collections of poems to his credit. Most of his works have been translated into a number of Indian languages. He has also edited books, and one of his works, Sheen, was picked by the film industry for screening. The next poet is Professor Jayashree Kamba. So, she is a well-known writer in English and Kannada. She is presently working as a head of the Department of English at KLES in Bengaluru. She has published 2 collections of poems, Replace and a translation, Buddha the Light. Apart from this, she has rendered poems in prestigious state and national symposia of poets conducted by All India Radio. She has participated in the Writers' Conference held in various states. Then next, so Krishna Rao. Mr. Krishna Rao is very well known by his pseudonym Krishnadu. He has vast experience of about 4 decades in journalism, and he has been writing books and poetry especially. And he has one book of literary essays, 3 books of poems, and 3 books of political writing, including biography of former Prime Minister late Sri P.V. Narasimha Rao. Krishna Rao is presently working as an associate editor with Andhra Jyoti, Telugu Daily. He received a number of awards for his literary and journalistic writings, including Sahitya Academy Prize for Translation. So it's a pleasure to have you with us.
I've never chaired a session, so I don't really know what to do. Should we start? So I think according to the list, I think I'm the first. So maybe I should start. Hello, hello. I am a Tibetan refugee. I came into India when I was 11 years old. It has been 40 years since I lived here. I write in Tibetan and also in English. I don't think it makes much sense for me to read in Tibetan, so I begin reading in English and my poems. My writing has to do with my experience as a refugee who haven't seen my homeland for over 40 years. So the first one is called The Banishment. Away from home, I live in my 36th wedding with a trapped bee and a three-legged spider. The spider crawls on the wall and I on the floor. Bee bangs at the window and I on the table. Often we stare at each other, sharing our pool of loneliness. They paint the wall with the droppings and webs. I give them isolated words. Net, maze, temple, wings, buds, flutter. Away from home, my minutes and hours. Spider travels from the window to the ceiling. Bee flies from the window to the bee. I stare out of the window. Neither speaks each other's tongue. I wish you would go deaf before my silence. Uh, Exile is synonymous with separation. And I haven't seen my mother for over 40 years. And these days, people celebrate birthdays with cakes and candles and balloons. But I don't really know when I was born. And so sometimes I wanted to have conversation with my mother to find out when exactly was I born. But there is no way. So I wrote this poem, which is an imaginary conversation with my mother, called When Was I Born? Mother, when was I born? In the year the river dried. When was that? That was the year when crops failed, and we went hungry for many days. We feared that we would never survive. Was that the year we moved to a new house? That was the year when they confiscated our house and divided it among the Beto party members. We were banished to the cowshed where you were born. What year was that? That was the year when they destroyed the monastery, melted all the bronze images to make bullets. You were born with dust filling the sky. Was that the year Grandpa went away? That was the year when they sent your grandfather to prison, where he cleaned sheep and butchered insects to feed. You were born, but there were no men in our house. Was I born in the year the walls were built down?
they ripped apart the rail hall. Wooden beams were hammered to splinters and fresco swords. You were born when the crazy wind blew from the east. What year was that? That was the year when they burned scriptures in the village square and sang Moorish songs in the praise of the party. You were born when a blade grass refused to grow. Was it the year you stopped singing? That was the year when they took our neighbor to the hard labor camp when she sang the traditional song while tickling him up. You were born when people disappeared one after another. When was that? That was the year when they wrote that big red slogan on the wall. Heads that stick out will be hammered down. You were born when the sun shined away from our sky. When was that? That was the year your father, your father. But it is not always the desperation and frustration and anger that drives a life of exile. Sometimes we try to celebrate everything that comes our way. But even when we try to sing, sometimes we come to the same point, the same circle, the same vicious circle. So this is called a song. All my moments belong to you, and I'm lonely still, enveloped in the smoke of your shadow, like a dandelion under a tree. My head swells with your thoughts, and my heart is empty still, left behind by your pack of mans like a hopeless talking. You are a spotless distant moon. I am a pebble on the shore, waiting for the next wave bathed in the light. I am no more than a fallen lily, a feather stuck in a Geneva tree, but I circle you all until the stars outshine the moon. In search of your warmth, I follow the path of a vulture's flight, and my sparrow's wings takes me to the desolate corner of my room. Here, I stare into the dusky screen of my laptop, hoping to write a song about the breeze that brings your fragrance. Yesterday was 10th March, which is a really important day for Tibetans because on 10th March 1959, resistance took place in Lhasa, capital of Tibet, and subsequently His Holiness the 14th Dalai Lama and 80,000 Tibetans came into exile to India, Nepal, and Bhutan. And it has been 64 years since we have been living as a refugee. And every day of our life is nothing but resistance. I have principle and not power. You have the power and not principle. Since you being you and I being I, compromise is out of the question. So let the battle begin. I have truth and not force. You have force and not truth. Since you being you and I being I, compromise is out of the question. So let the battle begin. You may club my skull. I will fight. You may crush my bones. I will fight. You may bury me alive. I will fight. With the truth inside me, I will fight. With each ounce of my strength, I will fight. I will fight with my last kind of breath. I will fight until the castle you build with your lies
comes tumbling down. Unto the despot you worship with your eyes, kneels down before my truth. Uh, Perhaps I should stop here and I would like to invite the next. Hello. I would like to now introduce Guru Kumarji. Uh, he will read in English. Good morning, everyone. The first poem I will, recite is titled "I Spill the Missing Breast Milk." This poem belongs to this collection, which was launched last year in October. This is titled "Rhythm of the Ruins," and this poem has been loved by one and all, and most debated poem, and very dear to my heart as a creative artist also, because this poem depicts poverty at its ugliest and very well illustrates how art is able to convert even as ugly a thing as poverty into something so beautiful. How pain gets converted into pleasure. That is the basic function of art, to create beauty. So here goes the poem. I spill the missing breast milk. As I pass by a shanty in the Dharavi slum, where I am to buy myself a leather jacket, an unconscious sight strikes me hard, plucking me from the enthusiasm, the excitement of an addition to my variegated wardrobe. A woman suckling her newborn, unmindful of the exposure, her femininity robbed of coyness by the classic arms of poverty. The child frantically sucked the breast that looked distastefully shriveled for the milk that was not there. Color of the milk that I spilled the same morning. The glass toppled by an unmindful hand engaged in an entertaining mobile. Changes to blood. Changes to blood red in the mind. That is a crab nebula. Now, it is her blood that could not be mutated into milk for her breast. It is her blood that could not be mutated into milk for her breast. The hallucination churns me, filling in the horrific pity on my belief in socialism and knowledge of welfare economics. So this poem basically is special to me in more than one way. Like it majorly inspires the title of this collection, also "Rhythm of the Ruins." Truly, I think art helps you find rhythm even in the ruins. So that is how it is. The next poem which I will be reciting depicts the beauty of nature, because nature, I believe, is the most palpable reflection of divinity. You just reflect on nature and you feel that there is some divine order that guides you into some, contemplative thoughts, that who created this order. Ultimately, that sense of awe it inspires. So that is why I think nature is the most beautiful accessory for an artist. Otherwise, also it is an inexhaustible supplier of metaphors, similes. So without nature, you can't conceive art, basically. So this poem is titled "A Testimony to Divinity." As I told, that nature is the most palpable reflection of divinity. A testimony to divinity. The spring winds stir in the boughs. The spring winds stir in the boughs.
setting them into quiet quiver, caress my ears with a sweet sonorous whisper, and rustle over me, and I rejoice this sheath of a nameless pleasure. Birds flit in the hedges and bushes to set them off into the tremor of thrill, hop and peck about in a wide wonder, their chirps and chirrups echoing the silences. Bees buzz around, and butterflies hover with a frantic freedom, unlocking a curious wanderlust in me. My wonder, being nimble and wide, thirsty for more, travels to the sky that is radiant, celestial with the liquid gold, the iridescent clouds, misshapen and mesmerizing, wandering, gilded and gay, and the starlings and the birds unknown fly wide winged on their way. The moon waves, and into the gold infuses of dark silver, and around the ball of fire, orange, lavender, turquoise, and what not, turns the iridescent gray, and the birds in droves get set in spray. Time turns winged, and the mood gets steeped in an ecstatic melancholy, and I am moved, motionless, awakened into a sublime slumber, when the senses unite to serve the spirit, and the divine faith demands, and the divine faith demands no demonstration. And one last poem which I will recite has again been inspired by nature. The actual sight of a bird just taking flight from a bough of the tree. It came out in a sudden flash. That is the beauty of poetry. It comes in a flash, and it is the journey of a single impulse. I wish to be where I am not. This is the title. I wish to be where I am not. The cheerful quiver of the twig the bird has just left. The cheerful quiver of the twig the bird has just left. A soothing surge raised from a seething stillness within. The sonorous resonance. I am where I am not. I am where I am not. The spirit on a spirited voyage, searching the uncertain destination of the world. I am where I am not, the spirit on a spirited voyage, searching the uncertain destination of the bird. I wish to dwell where I don't. It is just man's eternal quest for freedom. And when it is the moment when you are feel gripped with wanderlust. Searching the uncertain destination of the bird, I wish to dwell where I don't. I wish to continue being where I am. Thank you. The flavor of poetry has to be tasted in many different languages. We have four wonderful poets reading from different Indian languages. First of all, I would like to invite Agnisha to read Hindi. I would like to request each poet to spend about 10 minutes on the next poem. धन्यवाद पूछो और मेरे बाकी दोस्तों. I share my exile consciousness with poetry. You are a refugee in India and refugee in my own country. Yes, I am a refugee in my own country, my state, and you are a refugee from Tibet into India. So we share the exile consciousness. मेरे में दो कविताएं सुनाऊंगा. एक तो शत्रु की दया. मैं जिन्होंने की सभी हदें पार, असहमतियों, विरोधों और सहिष्णुताओं को दिया देश निकाला या फेंक दिया अंधे कुएं में,
शातिरों की तरह मिठाए सबूत, वे कर रहे हैं चर्चाएं आसन्न खतरों की, उछाल रहे मुद्दे गोया मसीहा हो वे ही। हे भगवान, एक ग्लानि बोध कूट कूट कर भरा जा रहा है देश में। हे भगवान, एक ग्लानि बोध कूट कूट कर भरा जा रहा है देश में। आड़ में जिसकी निरापद है हमारे शत्रु, उनके पैरोकार क्यों न हो वे भले ही हमारे बीच के ही लोग, बिकते हुए दलाल या हमारे देखे हुए प्रतिष्ठित चेहरे ही। वे जिन्हें पता है विदेशी गुप्तचर एजेंसियों की कार्यशैली, हंसेंगे नहीं मेरी बात पर। वे जिन्हें पता है गुप्तचर एजेंसियों की कार्यशैली, हंसेंगे नहीं मेरी बात पर। निरापद है सीमा पार से आए आतंकी, यही कहीं चाहे खड़ी कर रहे हो बाजार में बारूद भरी कार, और अभी मच सकता है कोहराम। टीवी चैनलों पर उछलेंगी खबरें लहूलुहान, गरमाएगी राजनीति। कितना त्रासद है जिन्हें चाहिए बोलना, उनकी खतरे में पड़ती है छवि। ये हमारे समय और चौतरफा राजनीति के कितने खराब दिन हैं। उससे भी खराब है सिर्फ कविताएं लिखना, भरम पालना या फिर कन्नी काटना। इन दिनों झूठ, मक्कारी और छद्म के घने कोहरे में, इन दिनों झूठ, मक्कारी और छद्म के घने कोहरे में, जबकि चंद मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े हमारे सामने कोई किसी की पीठ में घोंप रहा हो चाकू, या चलती कार में किसी असहाय लड़की की नोच रहे हो बलात्कारी, या दफ्तरों से की जा रही हो गोपनीय फाइलें गायब, लिखा जा रहा हो चालू निंदा और भर्त्सना का नया पाठ। हे भगवान, हम कितने भाग्यशाली हैं कि फिलहाल हम जीवित हैं शत्रु की दया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कश्मीर में लक्षित हत्याएं की गई हैं, अभी भी वो दौर चल रहा है, टारगेटेड किलिंग्स से कहते हैं। कविता का शीर्षक है लक्षित लोग। वे जो राह चलते या घरों में गोलियों से मारे गए, कोई खतरा न थे, दाल रोटी खाकर दिन बसर करते, उनकी कोई राजनीति भी न थी, उन्हें प्यार था जीवन से, बहू बेटियों से, प्यारी थी दादी नानी की तरह मातृभूमि। वे निरीह भेड़ों से दिखते सौम्य, वे निरीह भेड़ों से दिखते सौम्य, हाँ में हाँ मिलाते। वर्चस्व और उत्पीड़न में जीने का ये गुर था उनका, इसलिए जैसे तैसे जी लेते एक एक दिन गिनकर। सच है कि इतिहास ग्रंथों से ज्यादा, सच है इतिहास ग्रंथों से ज्यादा वे समाचार पत्र और स्थानीय पंचांग ही पढ़ते थे। वे औरों के मुंह से अपने विद्वान पुरखों के बारे में सुनकर खुश होते। ये उनकी स्मृति में जरूर था कि कैसे वे दुर्गम पर्वतों को लांघ कर गए थे मध्य एशिया, चीन, तिब्बत से आगे बुद्ध का संदेश लिए।
वे भोले थे, अस्फुट थी उनकी छोटी छोटी इच्छाएं, वे अन्य थे, वे न थे उनके जैसे, जबकि अन्य नहीं थे पड़ोसी उनके लिए, जबकि अन्य नहीं थे पड़ोसी उनके लिए, दुख सुख में थे भागीदार, और जब क्रॉस फायरिंग में मरता निर्दोष कोई, दुखी होते घरों में अकेले, वे जीवित थे, वे जीवित थे, चुन चुन कर भून डाले गए नफरत की गोलियों से। वे घरों में सुबह शाम पूजा पाठ करते, शादी ब्याह की योजनाएं बनाते, ट्यूशनें पढ़ाते, कविताएं लिखते, कभी कभी उनमें आगत का पूर्वाभास भी होता। वे इतिहास के उन 11 घरों के वंशज थे जो बचे थे किसी तरह वेश बदलकर अज्ञातवास में। उनके पुरखों ने राहत की सांस ली थी सुल्तान जैनुलाब्दीन के दौर में, जिसे वे बादशाह कहकर अक्सर याद करते हैं। शायद इसीलिए बड़शाह पुल श्रीनगर में ब्रिज का नाम है। शायद इसीलिए बड़शाह पुल उन्हें सबसे सुरक्षित और सुंदर लगता है, जिस पर से होकर बेखौफ वे कहीं भी आ जा सकते थे। वे जो मारे गए, उनकी आत्माओं ने नहीं किया पलायन मृत्यु उपत्यका से बाहर। धन्यवाद। I would like to now request Jayashree to read in Kannada. Good afternoon, everybody. I'll first recite few lines of my poem in my language to give you the sound, the flavor of my mother tongue. ಕವಿಯೇ ಕೇಳು, ನಾನು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಶೀಟಿನ ತಾರಸಿಯ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಮಳೆಹನಿಗಳು ಬಿದ್ದಂತೆ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸ್ಟೇಜಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೂರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಧೈರ್ಯವಾಗದೆ ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತೆ. ಯಾರ ಪರಿವೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಬಳಿ ಕುಳಿತಳು, ಹೇಳಿದಳು. Now I'll read the same in English, translated by me. Listen, Poet is the title. After reciting my poem, as the thick rainfall on the sheets of roof, there was a loud applause. While stepping down the stage, I saw her sitting at the far end of the hall, staring. I dared not to go near her and sat far away. She came, sat beside me, and said, "Do not call me Kunti in your poems to remind and trouble me of my sins. Do not stir fire of my humiliation by calling me Sita. Stop mentioning me as Madhavi. I was deceived again and again. Do not drag me as Draupadi in the public to mortgage my robes and dignity. Do not make secrets of my heart nude with your metaphors. I have been getting stripped nude in different ways from ages. Do not stir my memories. Do not peel my wounds. Again and again, let them heal. I want to rest on some memories, so listen, poet. Let me be a woman,
not a poem. Sorry. Lines of memories. Listen, I will talk now. You ought to listen. Words bloom in our private world, shutting views of other paths of mud between the neat rows of smiling flowers. Do not get lost in rainbow colors. Listen as seasons pass by like moving clouds. We sit together holding our hands, but rhythm of roots stoop and stop, spreading darkness beneath our feet. Nothing can bring down the moon. Metaphors are not refined yet. Our eyes are dry and wrinkled. No stars can be held within. The fire will blaze like strings, stripped from crimson sun of evening sky. Do not get distracted. Be aware of grey new ash at its root. Be careful. Let us not forget to steal the spark from corners of our eyes. True, every season of rainfall seems new, with fresh fragrance of stale mud. Every drop, a pearl of grey sky, melts in the dust of soil. Like raindrops fill ponds of our hearts, gentle ripples of words whisper. Unfold your palm of memory gently. Look, lines across stretching to fingertips. Curved lines, straight lines, short lines, long lines, thick lines, faint lines. Some lines like triangle, imprints of memories. Your lines are different from mine. Let's sit some time and align these lines in space of time. Till then, let the words bloom in our private world. Tears. The title is Tears. The day when I saw myself, I sensed the pain of my sorrow, a dark cloud in my heart. Perhaps a star or two could be seen in cloudy sky, but here, not a speck of stardust. Dawn sounds in neighborhood and streets. Heavy breath prepare memories to rush. Eyes all set to let flow the tears. Just then, the doorbell strikes as thunder. I withhold tears and let in the maid. A thin line of white smile appeared automatically. Pain pauses. I bounce to house chores, unconfused as neatly spread days in a row of weeks in calendar. Tears can wait. I enter office with a load of pain. Draw again a thin line of smile across my face. Within the office walls, gentle taps on computer keys, hushed talks over phones, cabins to isolate ourselves, giggles over coffee cups, etc., etc. Tears always wait. But then, there are words between my fingertips, computer keys, and screen. Words ought to play a game of time. Tears do wait. Cloud of pain darkens by the evening street lights. I rushed home, inhaled morning pain to remind my tears to flow.
A pillow lied on the bed like a cracked barren land waiting to seep in tears. I dragged my tired feet, brooded a while, to rest or weep out with bitter sorrow. Eyes were tired. I decided to rest. Tears? Tears can always wait. Thank you. Haridashi, who writes his Malayalam book now. Thank you. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നമസ്തേ. My first poem about my mother. Mother, that ignorance was the greatest wisdom, and uneducation, the greatest education, was taught to me by my mother. It fills me with wonder to see my mother who struggles to write her name and sign about it with sleep. Do the accounts and read buzzwords quickly than me, the more educated. My mother is to me an account above the accounts, on education above the education, and wisdom above all wisdom. Then next poem, Light of Burning Fire. Every word you uttered was as etching as thousand stabs. My heart was broken into pieces like a mirror smashed on the floor. Every piece of my heart smeared in tears and blood. And all at once in this world, I was pushed into a terrible solitude. Darkness pierced my eyes, my sight turned black and dark. Sounds manifest as loud screams. And I stand burning in the fire to wash away the darkness embracing me. And I see you in the light of my burning fire, writing me a letter of love that you knew I would never read. Then flags. I held flags of various colors, and then I realized all flags change colors. Their colors changed and changed until they all turned into black flags. They fly in the wind, celebrating the death of a nation. The truth. So many ways to arrive at the truth. Through Parasharan, through Vyasan, through Charlagan, Buddha and Shankara, through Narayana Guru. How many different ways, but in the spirit of all this truth is but one. Then praise. They hiked the price of milk, I gave up drinking tea. They hiked the price of rice, I gave up eating meat. They hiked the price of water, I gave up drinking water. They hiked the price of air, I gave up breathing. Thus I defeated the price of height by giving up my life and embraced all the praise by showing them my cross. The elephant and the blind man. We all know how the blind man saw the elephant, but until now, we have never asked how the elephant saw the blind man. For centuries, the elephant had been expecting this question. In spite of that, we never asked that question. We have not yet acquiring the habits of asking right questions of the right time. Had we acquired it, our history would not have been the same. The love of God. When the trees turned into a cross, the carpenter was promoted in Christ and was crucified. When silver turned into silver coins, the disciple of Christ was promoted
where Judas and hanged himself. History. A great conference of historians met in hell. All the great historians of the world who had passed away attended it. Finally, all the historians fell into fighting among them about who had best distorted truth. Mahabharata. What is heaven if it is a heaven without law? I do not need it, spoke Yudhishthira, unflinching to the death. Even death lost in front of Dharma, accompanying Dharma, heaven is assured, even for a law, as a Bharata to a world ridden with the other law. August 15th. By the roadside on Independence Day, children hold out tricolor flags. I also brought one this Independence Day to raise it above the black flag of my slavery. Sri Buddha. Old age, disease, and death. In search of answers, Siddhartha left his kingdom. His wife and son stepped into the moonlight as Sri Buddha, and yet old age, disease, and death continues her victorious journey. Gandhism. I love Gandhism the most. If it be on a currency of 500 or 1,000, so much the better. In a small poem, good poetry. A good poetry seldom reveals its meaning the way a tree seldom reveals how its roots travel. Thank you. I would like to know requires question or HG. Please. అందరికీ నమస్కారం. अभी सर्दी घट गई है फिर भी मैं उसके बारे में बहुत कविता पढ़ता है. एक कविता सर्दी में जहाँ बहुत ठंड है, आंखों और कानों से ठंडी हवा रक्त में प्रवेश कर जमा देती है. नसों के चारों ओर लिपट कर बर्फ अंगों को काम करने से रोकता है. संसद में हिम पुरुष बात कर रहे हैं. गांवों से गर्म हवा यहाँ पहुंचते ही ठंडी हो जाती है. हाथ मिलाने पर सूखी बर्फ झटकर गिर जाता है. बात कर रहे लोगों के मुंह से बर्फ का धुआं हवा में धुल जाता है. सुबह कोहरा घना फैला हुआ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करते हुए पहले गीली कर देती है. ठंडी उंगलियों के बीच कागज लहरा रहा है. बजट के कागजों पर अक्षर हिम सुमन की तरह लेटे हुए हैं. रात की धुंध के बीच राह की बत्तियां और वाहन की रोशनी काल शून्य हो गई है. रात की धुंध के बीच राह की बत्तियां और वाहन की रोशनी कला शून्य हो गई है. इंडिया गेट को धीरे धीरे हिम स्पर्श कर रहा है. कभी क्षय नहीं होने वाले ताजी लाशों की तरह गलीचे के नीचे ठंडा पोल बहता हुआ.
मौत की महक से राजधानी चमक रही है। मचलते खून वाले भक्त के आंखों में गजब की शांति है। पता नहीं कहां से खबरें वायरलेस में आ रही है। वे सभी जिन्होंने खून बहाया उन्हें ठंडे बस्ते में भेज कर दिया गया, जहां कभी भी सर्दी जीतती है। जहां कभी भी सर्दी जीतती है। अधिकार के सोपानों हिंद साम्राज्यों के लिए मुकाबला करना हो तो खून ठंडा पड़ना जरूरी है। दूसरा, शीत विजेता बने। खिड़की के शीशों पर ठंडी ठंडी ने दस्तक दी। कीबोर्डों के सुराख से जबरन घर में घुस रही है। पैरों से लिपट कर नाखून के बीच से उंगलियों को शून्य कर देती है। पलकों पर सुर्ख बनकर टकटकी हिम बना देती है। ठंडी देह को जकड़ाती है, जीवन नीरस बना देती है। शब्दों और अभिवादन पर, मुस्कानों पर कोहरा पाई जाता है। ठंडी त्वचा को गर्म किए बिना अवरुद्ध करते हुए मस्तिष्क में प्रवेश करती है। विचारों पर हवाएं अमोद घनी घूमती है। ठंडी घड़ी रीढ़ को ताना मारती कर्कशता के छुबन से बींधती है। ठंडी असहायों पर ठंडे बरसाती है। भूखे रक्त पिपासु सी पीछे पड़ते हैं। रात की चांदनी को ओट में छिपाए हम सुबह सूरज की किरणों निकल रही है। ठंडी गगन पर जाल पहन के चिड़ैया फांसने की कोशिश कर रही है। किताबों पर ठंडी दीपक की तरह फैलती हुई गीतों में घुसती जा रही है। सुरों की रोकती है। ठंडी बच्चों के चेहरे पर पहली नादानी से गुणा करती है। सुगंधित फूलों को अनिच्छा पूर्वक रौंदने की कोशिश करती है। ठंडी लोगों की बस्तियों में उजागर बन देती है। ठंडी संजीदगी से सवाल करती लाशों से प्रेम करती है। शीत अजय नहीं है। शीत अजय नहीं है। फोटो पर रोमांच बनकर चमक उठी रक्त की गर्माहट बढ़ाती है। शरीर में निखार लाती है। चिंगारी सा मचलने वाला हर अक्षर हिम का कारागर तोड़ देता है। दिल्ली में ठंड घट रही है। देश में ठंडी घट रही है। Thank you very much. How wonderful if each of us can understand all the languages that the poets have read. Malayalam, Telugu, Kannada, Hindi, but we can't. Nevertheless, I think it is fundamentally important for each of us to hear others' voices. It is only through hearing that we understand each of us. By the way, like someone or not is a personal choice, but you have to hear, understand, and empathize. Only then we can progress as a humanity. We can live together peacefully. So thank you very much. I would like to thank all the poets who have done a good job, and thank you for being Thank you very much. Hello everyone, we will start the next session immediately because since all the poets are here. Yeah, just maybe 5 minutes. This is possible here.
Arjun Gupta is a noted English poet and he has authored 4 books of poetry, including A Clock in the Far Past and 2 volumes of translated works. His literary works have also been translated into many Indian and foreign languages. He is a recipient of fellowship of our outstanding artists from Government of India and the International Publishing Fellowship from the British Council. Our next I'm really sorry. There is some problem is there. They are unable to lower the volume in that shop. 1 second, just hold. Our next poet is Rakesh Sharma. Rakesh ji is an eminent Hindi writer. He has more than 15 books to his credit, and he is a recipient of Madhya Pradesh Sahitya Academy's Sri Krishna Saran Samman. After retiring as Assistant Director of Official Language in the Ministry of Labour, Government of India, he is presently editor of Veena, a Hindi poet is Krishna Chamu, representing Manipur. And she's a bilingual poet, writer, author, translator, and an editor from Assam. Since childhood, she has been writing poetry in her mother tongue, Manipuri, and in English also. And she has published 2 poetry books, and one of her poems is exhibited in the Poetry Museum in Italy. And the next poet is Jayakumar Manbudire. So Jayakumar Manbudire is a well-known Tamil poet, and he has one collection of poetry to his credit and one in translation. His stories and articles have been published in different magazines. He has also translated poems for All India Radio. He is a recipient of a Nagel Award, S.R.B. Bharatidasan Award, and Pave Award. Presently, he's also one more journalist. I think today we have so many journalists reading poems. He's one more now, and he's with the Hindu newspaper. And our final poet in the session is Muhammad Umar Fahad. He is an eminent Urdu poet and writer, and he has one novel, 2 books of poetry, and 4 compilations to his credit. His ghazals, articles, and interviews have been regularly published in several Indo-Pak magazines of repute. He is a recipient of Sahitya Academy Yuva Puraskar in Urdu for 2021 and the Pakistan Academy of Letters Award in 2022. He is editor of Tarfeen and Urdu Quarterly Literary Magazine. I request Mr. Mrityunjay to conduct the session. Thank you. Thank you, sir, for introducing all of us to the audience. Good afternoon. Good afternoon, all of you. As you know that in this Vyas Sabhagar, we all have come to listen to some of the best of the poetry
from the poets. And Sahitya Akademi does it in its Sahitya Utsav every year, where it creates a bridge between languages. Today we have 6 poets with me, and as I quote Misna first, Misna, she says, "Where we both are a traveler crossing our paths in a blessed point of the line, drawn by the hand of destiny." So how beautiful it is that we are a traveler crossing our paths. And I invite Mr. Chanu. And before inviting her, I must tell all poets that we have about 10 minutes each. So you have to understand that in these 10 minutes, which are the poems which you have to choose and you have recite. Mr. Chanu, please. Thank you. Okay, go. Kuranjeri, Namaste, good afternoon, all the eminent poets and respected people here. I'm Mishna Chanu from India, but I live in Gurgaon. The first poem I'm going to recite in my mother tongue, that is Manipur, and the title of my poem is Nanga Karimba Nikshika. If you ever remember me. Nanga aigu karigumba ningsing laklabati. Tingthokpiu nangi pamom ani aduga shokpiu tapna. Liri liri humba malaya nungshik nami gabu. Malin lemai thakki upul marik. Hai na humna hauriba upal thakki unabu. Thek na khoi na cheliba lai cheliba. Nanga aigu karigumba ningsing laklabati. Shokpiu tapna koro magi mashik mangal nongudol thakki tarakliba nonglik aduga konsin biu nathada upal hamladani nahak na magkoi punama aigi thamogi isegi surga loina aigi thawai haksha anu chakhalli khawla mairi amasha for first poem, I'll read the translation into Hindi, and afterwards I read in English. The translator's name is Mohini Hingorani, the director of former Ministry of Culture. यदि याद आए तुम्हें मेरे, यदि याद आए तुम्हें मेरे, फैला लेना बाहें अपनी और छू लेना हवा को, छू लेना मिट्टी को, छू लेना पत्तों को और छू लेना लहरों को। यदि याद आए तुम्हें मेरी, छू लेना गुनगुनी किरणों को, रिमझिम बारिश की बूंदों को, लिपट जाना किसी पेड़ के तने से, इन सब से मिलेंगे तुम्हें मेरे गीत और मेरी अभिलाषाओं के अंगार जिनमें जल रहा है मेरा स्वप्न। And my next poem, it's about domestic violence. As we have celebrated Women's Day just 2 days ago, 3 days ago actually. And so it's about the women, it's about domestic violence, but this domestic violence not about the physical, it's mental and emotional. And there are more than those that can be visible or that leave evidence of violence. And there are those who cried under the curtain of night till the first ray of day, then with sullen eyes
and shattered heart, pick up all the broken parts together to carry on for living, and to do what is needed to be done to prove as living, to feed the children, to smile at the neighbors, perhaps to make everyone believe that everything is fine, and perhaps more to make themselves believe the unbelievable events of life. Violence is not only physical. For those, there are those too whose souls are tormented with the cruelty of daily accusations, whose hearts are cut open by sharp knives of mean words. And there are those who live without the respect they deserve, not having the feeling of being wanted, loved, and most importantly, valued. But life without value is as terrible as slow poisoning, killing slowly and steady, part by part, moment by moment. A death that cannot be clarified by any postmortem, or that is not registered under any section of violence. But they are out there, so many of them are there. They are forced to believe their silence as their jewels, to be worn as necklace. Yes, they are out there, who have been crying in silence, who have been dying with no evidence of that, but who listen to their voices until and unless they admit that, until and unless they believe in their own word and word. My last poem, I read from my book. The title of my poem is My Verses Are Staying. My verses are staying with the silent cries of the unborn poems inside the womb of feelings aborted by cruelty of time before the birth of a dream. My verses are staying with the unseen tears of love that remain unnoticed from the heart for which my heart cries. My verses are staying with the invincible moments of melancholia, when solitude loses its leaf of charm for being solitary, like an autumn tree, but with no hope for the arrival of spring. My verses are staying with the memories of despair, denying to fade away with time, and the tales of betrayals being told again and again in life. My verses are staying with everything I have lost in my life, and all that no longer I can claim as mine. Thank you. मैं प्रेम के कोमलतम भाव से लेके हिंस्र अनुभूतियों का दुख और वेदना दोनों मिश्रा की कविताओं से उभर कर आया। हमारे पास अभी अभी आपने सुना कि युवा साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से नवाजे गए हैं उमर फारूक साहब। ये दुनिया किस चक्कर में खो जाती है, होने वाली बात तो बस हो जाती है। तो आइए आपसे सुनते हैं कौन सी बात कहती है। स्वागत करें उमर फारूक का। मुकम्मल ख्वाब देखा जा चुका है, मुकम्मल ख्वाब देखा जा चुका है, अंधेरा नींद से उकता चुका है, अंधेरा नींद से उकता चुका है, ज़मीं पर जिंदा लाशें रह गई हैं, ज़मीं पर जिंदा लाशें रह गई हैं, कोई इंसानियत को खा चुका है, ज़मीं पर जिंदा लाशें रह गई हैं, कोई इंसानियत को खा चुका है, किसको देखकर हम
खिल उठते हैं, सॉरी, किसी को देखकर हम खिल उठे हैं, किसी को देखकर हम खिल उठे हैं, वगरना कब का दिल मुरझा चुका है, वगरना कब का दिल मुरझा चुका है। कहाँ है दश्त में वहशत सराय, कहाँ है दश्त में वहशत सराय, मुझे मजनू पता समझा चुका है, मुझे मजनू पता समझा चुका है। मोहब्बत बैन करती फिर रही है, मोहब्बत बैन करती फिर रही है, मेरा दुश्मन मुझे दफना चुका है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक और, ये बस मोबाइल में है। जख्मों से अच्छा हो जाऊं, जख्मों से अच्छा हो जाऊं, बात करूं हल्का हो जाऊं, जख्मों से अच्छा हो जाऊं, बात करूं हल्का हो जाऊं, काश मेरी कीमत बढ़ जाए, काश मेरी कीमत बढ़ जाए, काश मैं कुछ महंगा हो जाऊं, काश मेरी कीमत बढ़ जाए, काश मैं कुछ महंगा हो जाऊं, तेरे कदमों पे सर रख दूं, तेरे कदमों पे सर रख दूं, मैं दुनिया जैसा हो जाऊं, तेरे कदमों पे सर रख दूं, मैं दुनिया जैसा हो जाऊं, आ जाऊं उसकी आंखों में, आ जाऊं उसकी आंखों में, और मैं क्या से क्या हो जाऊं, और मैं क्या से क्या हो जाऊं, सबका असर फरहत ले लूं, सबका असर फरहत ले लूं, मिट्टी का पुतला हो। खामोशी का सहरा हूं, खामोशी का सहरा हूं, इस दुनिया में तन्हा हूं, खामोशी का सहरा हूं, इस दुनिया में तन्हा हूं, मुझको मुझको भी मालूम नहीं, मुझको भी मालूम नहीं कैसी बातें करता हूं, याद यादों की एक बूंद हूं मैं, यादों की एक बूंद हूं मैं, और आंखों में रहता हूं, यादों की एक बूंद हूं मैं, और आंखों में रहता हूं, दर खुद ही खुल जाता है, मैं कब दस्तक देता हूं, तुझको भी कुछ जल्दी है, तुझको भी कुछ जल्दी है, मैं भी जाने वाला हूं, तुझको भी कुछ जल्दी है, मैं भी जाने वाला हूं, तोहमत का दर बास हुआ नहीं, फिर से मेरा हाथ पकड़, फिर से मेरा हाथ पकड़, यानी गिरने वाला हूं, फिर से मेरा हाथ पकड़, यानी गिरने वाला हूं, आंखें सुर्ख तो होंगी ना, आंखें सुर्ख तो होंगी उम्र, आंखें सुर्ख तो होंगी उम्र, ख्वाबों का रखवाला हूं, आंखें सुर्ख तो होंगी उम्र, ख्वाबों का रखवाला हूं। शुक्रिया, बहुत बढ़िया उमर। आप सुनते हुए मुझे बात याद आ रही थी कि प्रेम की बातें हर घर में जब होने लगे तो यह समझे प्रेम के चटके धागों का दर्द फूट कर बह रहा है, दर्द चटके धागों का फूट कर बह रहा है, वो दर्द आपने गाया। और अब मैं अपने अगले कवि तमिल जय कुमार मंकुथराई, I would invite him to recite his poems. Vanakkam, Namaskar, Namaskaram. The poem name is Midila. Midila. Midila is another name of Sita. Midilapuri. Midilapuri. An aspect of Indian epic Ramayana and Hindu mythology are depicted in this poem. Padura Manal is an island near Alappuzha, Kerala.
Where is the poem inside? It is a poem about Sita's modern day counterparts. However, the poem tells Rama abandoning her beloved wife Sita. மிதிலா மிதிலா வெண்மணல் பரப்பினி மிதிலா மிதிலா ஏர்முனையின் கீழல்ல நீ தவழ்வது பாதிரா மணல் விரிப்பு நித்தியம் அனித்தியமாகி சமுத்திரங்கள் வற்றி வெண்குதிரைகள் கரையேறிவிட்டன. மிதிலா, நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? கரையோரங்களில் உன் கண்களை பறிப்பது மான் அல்ல, மாயமும் அல்ல. அவை செம்மீன் தேடி வரும் நீர்நாய்கள். மிதிலா, தாகமாக அல்ல, அவன் நீ வியந்து பார்க்கும் பாம்பு தாராவாக உருமாறி பறந்து கொண்டிருக்கிறான். பூமி புரண்டு புலன்கள் திசை மாறி 21ஆம் நூற்றாண்டு எல்லோரையும் வெளியேற்றிவிட்டது. அவர்களும் இவர்களும் அவனும் இவனும் கூட இந்த தீவிலிருந்து கரையேறி சென்று விட்டார்கள். நீதம் அநீதமாகி அநீதமே நீதமான பிறகு பாவக்கனி விழுங்கிய பறவையாக பாதிராமணல் மீது ஏன் பறந்து கொண்டிருக்கிறார் மிதிலா மிதிலா. The other poem is inspired by the novel Italian writer Roberto Calasso novel. The novel name is Car. It is based on the Indian mythology. I am very much inspiring this novel. This poem takes a thought about the sexual relationship between Shiva and Parvati. For centuries, they were involved in a sexual relationship. The gods, Devas, Brahma, Indra, like the other gods, who were afraid of it and sacrificed to stop the sexual relationship between Shiva and Parvati. Poem. வெண்கடலின் சிவப்பில் நாட்கள் உறைந்து போகின்றன. இலைகள் உதிர்த்த முதல் மரத்திலிருந்து வருடங்கள் உதிர்ந்து விழுகின்றன. அமிர்தம் தேடி அணியும் ஆதிசேஷன் உன் முனகளின் தெருப்பில் படமெடுத்து ஆடுகிறான். இன்னும் விழித்துக் கொள்ளாத நம் ஆழங்களின் சிற்பி நூற்றாண்டுகளை விழுங்கி செலுக்கிறது. மனிதர்கள் அழிந்து மனிதர்கள் தோன்றுகிறார்கள். சமுத்திரம் குடித்த வெண்குதிரை முழுந்து உருவாகிறது ஒரு மகா சமுத்திரம். காற்று திணறுகிறான், காலன் நடுங்குகிறான். சூரியன் நடந்து நடந்து சோர்ந்து போகிறான். தேவர்கள் யாகம் வளர்த்து தோல்வி அடைகிறார்கள். பதற்றமடைந்த நம் கடவுளரின் தந்தை இறுதியாக நம் கதவு தட்ட தொடங்கிவிட்டார். The third poem is entirely different from the other poems. It's not a rhythmic, it's a plain poetry based on the Tamil folk base. எப்போதாவது நீர் வரும் ஆற்றின் ஒரு பகுதி மைதானமாகிவிட்டது. இளைஞர்கள் இறகு பந்து விளையாடுகிறார்கள். முதியவர்கள் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்கிறார்கள். எப்போதாவது நீர் வரும் ஆற்றின் மணலை குத்தகைதாரர்கள் கொண்டு போய்விட்டார்கள். நாணல் அடர்ந்திருந்த அதன் மையத்திற்கு வேலிக்காடாகிவிட்டது. மயில்களும் காடைகளும் வெறுவு பூனைகளும் கூட வந்துவிட்டன. அந்த காட்டுக்குள் மொழிகளை தேடி வேட்டைக்காரர்கள் இறங்கிவிட்டார்கள். தூர் தட்டிவிட்ட கரையோர நந்தவனக்கு நெற்றி துருவேறிய வாளிகள் தலைகுவிழ்ந்து கிடக்கின்றன. கரை கடக்க பிரயாசப்பட்ட மாட்டு வண்டிகள் ஆற்றை பாதையாக்கிவிட்டன. கார்களும் வேன்களும் கூட அதில் கரையேறி பழகிவிட்டன. எப்போதாவது நீர் வரும் ஆறு தன்னை ஆறு என்று நிரூபிக்க இருந்த பொடிச்சங்கையும் சிப்பிகளையும் சிறுவர்கள் ட்ரௌசர் பைகளில் நிரப்பி கொண்டோடிவிட்டார்கள். தன்னை ஆறு என்று நிரூபிக்கும் பரிதவிப்பில் எப்போதாவது நீர் வரும் அந்த ஆறு பெண்கள் தோண்டும் ஊற்றுகளில் தன் நீர்க்கைகளை உயர்த்தி உயர்த்தி காண்பிக்கிறது. எப்போதாவது நீர் வரும் ஆற்றுக்கரையோடையில் நீரருந்த இறங்குகின்றன மந்தை ஆடுகள். ஆட்டிடையனும் இறங்குகிறான். வண்டி மாடுகள் இறங்குகின்றன. கரிசல் பறவைகள் இறக்கை நனைத்து பறக்கின்றன. மண்வெட்டிகள் கூடைகள் சும்மாடுகள் எல்லாம் இயக்கம் கொள்கின்றன. ஆற்றுக்கரையெல்லாம் ஊற்றுகள் பூத்து எழுகின்றன. பிளாஸ்டிக் குடங்களும் தவளப்பானைகளும் இறங்குகின்றன. மிதிவண்டி குடங்களுடன் ஆண்கள், பழக்க பேச்சுகளுடன் பெண்கள் இறங்குகிறார்கள். கடைசியாக இறங்கிய நீரண்டு பகப்பையில் மிதந்து மிதந்து வருகின்றன அவளது நீர்க்கண்கள். நன்றி. Hello. Yeah, you can hear now. Thank you, Ajay Kumar. From your poems and the theme of the poems, I hear that
and the godliness by humans, some may call it a expression. Hello? Some may call it Christian, but I think it is the rise of humanity when we start challenging godness and talking. Come on. There's something wrong with this mic. Hello? Yeah. I can, now I am going to pick our next, by no problems. Our next poet will be Sangeet Garcha. He is not only bilingual, he is a trilingual, quadrilingual poet. So you will listen to him. संगीत गर्चा कहते हैं, ढूंढता रहा सपनों के लिए जगह, शब्दों के लिए वजह, जो कुछ पाया पुतलियों ने पिघलाया, यही तो थी वह जगह जहां सपने बन जाते हैं बिना पत्ते वाली चिट्ठियां, जहां सपने बन जाते हैं बिना पत्ते वाली चिट्ठियां। तो भाई संगीत गर्चा का मैं आमंत्रण देता हूं, तो आए अपनी कविताओं का पाठ करें। आभार मृत्युंजय जी। यहाँ आने से पहले आज सुबह जब मैंने अपने 7 साल के बेटे को कहा, बेटा आज मेरी पोएट्री रीडिंग है, तो उसने तपाक से कहा तो मैं क्या करूं। जब तक ये सवाल हमारे जहन में बना रहेगा, तब तक खूबसूरती शायद बूंद बूंद हम में रिश्ती रहेगी। कुछ कविताएं पेश करूंगा। These are from my new collection of poems, which is not published yet. It's titled All We Have. Most of my poems come to me in dreams. Some of them I remember. The ones that I don't remember are unfinished poems. This poem is titled Unending. It's hard to know how tiny that room must have been. The room in which only one man could lie down. On a night, the town was dangerously close to being drowned in rain. It isn't hard to know what a knock on the door meant. The door opened, and soon there was only enough room for two to sit. The rain writing its unending story outside. Another knock, and there were 3 standing shoulder to shoulder, faces to the wall facing the street. The story doesn't say anything about a window allowing light in, or a bulb hanging from the roof, or a kerosene lamp fashioned from an ink bottle with a wick thrust through a hole at the top. The story doesn't say anything about the third knock announcing the arrival of a 4th man. Had there been another seeker, we know what would have happened. The first one to open the door would have stepped outside, letting the other 2 sleep standing up, letting the last guest cross the threshold and enter the new room that the other 2 had just built with their eyes shut. A room so wide that the whole town slept under its roof, the rain writing its unending story outside. This poem is titled Contained. Don't spill salt, says my playmate. She is 9, I'm 7. I've still not heard of heaven, but she tells me what's hell, the place you land up in if you ever spill salt. I stare at the white powder near my feet, the raw mango in my hand falling right on top of it, as if that was its plan. I cry. She knows why. They make you pick up the thing with your eyelids, she says. I bend down, making my eyelashes touch the ground.
as if it were mother's face. My lashes, the little brush I had seen in her makeup kit. Stop it, the girl shouts. There's no rush. Wait till you go there. I should have acted right then. At that age, my lashes would have made a nice room, and my eyes would have been spared the salt collected over all these years. The next poem is titled Lamp. This poem emerged when I saw my wife cooking, and it was the time of the pandemic. Again, this poem was completed in a dream. For now, there's only chopped onion frying with cumin for company. The oil sourced from a local miller reminds me of lamp oil, running out of which sleepless scholars in the mountains of ancient China read by the reflected radiance of snow. There is still time before I begin to melt, but perhaps if I keep at it, I'll know something unnameable as intimately as a pan knows suit, and find the miller sitting by the scholars, now reading aloud, now looking up, to see if someone has put the wok on the stove for the new guest from across the Himalayas. This is the latest poem written a few days ago. It's not been published anywhere. It's titled Replica. Someone exactly like you could have woken with a start 1,000 years ago to morning light exactly like today's. Someone with even the heart the same size as yours could have made 1,000,000 fears go to sleep in forests mimicking night. Someone with your laugh could have wept alone in unthinkable ways again and again. Yet the pain couldn't have been the same. एक पोएम मृत्युंजय जी के लिए हिंदी में पढ़ूंगा. एक महीना. ट्रेन में चढ़ते ही मन करता है किसी बहुत उजली सुबह एक अनाम स्टेशन पर उतरूं और बिना जगह का नाम जाने वहां पूरा एक महीना रहूं. एक ऐसा छोटा सा शहर हो जहां किसी भी दुकान पर शहर का नाम ना लिखा हो, जहां रिक्शे वाले से जब कहूं घर छोड़ दो तो वो किसी भी जगह छोड़ दे, बशर्ते वो जगह नदी के करीब हो, जहां एक भी घर में टीवी ना हो, सिर्फ आले में रखा कपड़े से ढका एक पुराना रेडियो हो जो अधिकतर बंद रहता हो और खिड़की के बाहर चिड़ियों के चहकने से ही समय का अंदाजा लगता हो, जो महज अलग अलग स्टेशनों की बात ही यहाँ तक ना पहुंचाता हो, बल्कि इधर की कुछ खबर भी उधर ले जाता हो. एक ऐसा रेडियो जिसे ऑन करते ही केवल यही सुनने को मिलता हो कि दुनिया के हर शहर का हर बाशिंदा रात की ट्रेन में चढ़कर अगले दिन की बहुत उजली सुबह एक अनाम स्टेशन पर उतरने के बाद और बिना जगह का नाम जाने वहां पूरा एक महीना रहने का अपना सपना साकार कर रहा है. धन्यवाद सर्वजीत for your very good poems recited. अब मैं अपने कवि राकेश जी को निमंत्रण देता हूँ, वो अपनी कविता का पाठ करें. आप सबको बता दूं कि पत्रिका मासिक के वीणा हिंदी साहित्य, व्याकरण, भाषा और देवनागरी लिपि इस सब के प्रचार प्रसार के लिए काफी काम करते रहते हैं. राकेश भाई, आपका स्वागत है और आपकी कविता का. बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी और समादरणीय सदन. मेरी पहली कविता का शीर्षक है कौन रचता है किसे. इसमें एक शब्द आया है अनुष्टुप. अनुष्टुप संस्कृत के छंद का नाम है और वह
पहली कविता विश्व की मानी जाती है। महर्षि वाल्मीकि का ने जो बोला था वो पहली कविता हुई और उसी पर ये आधारित है। कौन रचता है किसे, कविता रचता है कवि, या कविता रचती है कवि को। सुनाकर कौन का क्रंदन, कविता ने रचा था पहला कवि, और अनुष्टुप होकर उतरी थी वाल्मीकि के कंठ में। धन्यता से भरता है कवि जब कविता करती है उसका वर्ण। कविता एक सत्ता है, कविता एक सत्ता है अप्रतिहत और अखंड। कविता गंगा है जो निकलती है सृष्टा के कमंडल से। कविता एक गंगा है जो निकलती है सृष्टा के कमंडल से। भागीरथ सा कवि पाता है सौभाग्य जब कविता का अवगाहन। हरता है शोक, देता है विराटता, शांत क्लांत पथिक जब जाता है इसके तट। दो बूंद कंठ में धारने कवि दृष्टा है, कवि दृष्टा है। दृष्टा होना एक साधना है, पात्रता का अर्जन है कविता को धारने की, उसे शब्दों में उतारने की। अगली कविता का शीर्षक है स्मृति में गांव। हमारे गांव नष्ट होते हैं, शहर उनकी तरफ जा रहे हैं, इसी वेदना पर ये कविता है। निर्दय शहर ने मार डाला गांव वह, निर्दय शहर ने मार डाला गांव वह, जो अभी तक जी रहा था अपने सनातन रूप में। जो अभी तक जी रहा था अपने सनातन रूप में। मारा गया है गांव वह, और पुरखे भी मरे हैं साथ उसके, जो अभी तक जी रहे थे चौपाल पर। गांव के साथ ही मारा गया है नाता पुरातन। मर गए हैं खेत जो जी रहे थे आज तक मानव सदी की पहचान से। गांव के ही साथ में मर गई है दृष्टि जो देखती थी आदमी और पेड़ को एक जैसे भाव से। मर गया है नातन रिश्ता पुराना। वह मर गया है वह ठिया जहाँ झुकाते थे शीश हम सब। गांव के ही साथ में मारा गया है गांव ऐसे, जो निहत था मरे कोई क्षण भरे संसार में। चीख तक निकली नहीं उस पुरातन गांव की, चेतना में आज भी दिखता है गांव मेरा। पूछता है प्रश्न मुड़कर, पूछता है प्रश्न मुड़कर, लाश मेरी पर पांव रख चढ़े हैं विकास के सोपान कितने। मार कर अस्तित्व मेरा पढ़े हैं मनुष्यता के पाठ कितने। जब दबाई आंख से पूछता है प्रश्न मुड़कर, मार कर मुझको रच दिया है शहर तुमने। क्या शहर को मार कर भी रख सकोगे गांव कोई। क्या शहर को मार कर भी रख सकोगे गांव कोई। इस अयाचित प्रश्न से मैं था निरंतर देखता हूँ गांव को क्षितिज के उस पार जाते हुए। सुन रहे हैं कान मेरी लौटते आवाज उसकी, और अगली बार होगा मिलन फिर अब प्रलय के बाद ही। तो कविता अगर आप रचते होंगे, जब सर्जना के क्षण होते हैं, वे क्षण और जीवन के अन्य क्षणों के बीच फर्क क्या है। कविता में समय, ध्यान में रमे योगी का ध्यान में समय, ध्यान में रमे योगी का समाधि में समय। भुज पासों में आबद्ध प्रेमी का प्रेम में समय। साधना में डूबे कवि का कविता में समय। दिक और काल से परे जिया गया जीवन होता है। दिक और काल से परे जिया गया जीवन होता है। इन कालातीत धरातलों को छोड़ जब उतरना होता है नीचे, जीवन के खुरदरे धरातल और संकीर्णता भरी जीवन की जमीन पर, तब साफ साफ होता है बोध कि समाज के उन क्षणों में पैदा हुई चिन्मयी दृष्टि
कहलाती है मोक्ष। जहाँ पहुँच हम न होकर तुम न रहकर बन जाते, तुम न रहकर बिखर जाते हैं कण कण में और समा जाते हैं अक्षर अक्षर में कविता बनकर। जब जब जिसने भी जिए हैं ये क्षण, तब तब उतने ने ही क्षण पाया है मोक्ष और सब अनर्थ और व्यर्थ। प्रार्थना, छोटी सी कविता है। क्या प्रार्थना के लिए जरूरी है शब्द? क्या प्रार्थना के लिए जरूरी है शब्द? क्या मौन में संभव नहीं है प्रार्थना? क्या प्रार्थना के लिए जरूरी है शब्द? क्या मौन में संभव नहीं है प्रार्थना? ये नदियाँ, ये वृक्ष, ये हवा, चिड़िया, पशु, जल और चेतन सब तो लीन है प्रार्थना में। सब लीन ही तो है प्रार्थना में। इस विशाल जगत, यह विशाल जगत मौन साधक की समान, मौन साधक के समान हर पल प्रार्थना में है। तुम्हारी सात्विक प्रार्थना के केवल मौन क्षण ही स्वीकृत है। उस विराट को धन्यवाद। और अब हमारे इस सेशन के अंतिम कवि प्रवाल कुमार बासु। प्रवाल कुमार बासु की भी यही मल्टीलिंगुअल पोइट हैं और इतना काम किया है इन्होंने। उनकी एक कहते हैं वो, आई हैव सेड लिटिल so that the silence in between is translated well. I have said so little that there is not much scope for misunderstanding. How much more does one need to say when you profess love? And what a beautiful feeling, you know. So I hereby invite Prabal Basu to come and recite his poem in English as well as in Bangla. I will request that at least one Bangla poem would be very well appreciated. Good afternoon. Thank you, Mrityunjay ji, for giving such a wonderful introduction about me, which perhaps I have my doubts whether I deserve the same or not. I basically write poetry in Bengali, so I'll be reading one of my poems in Bengali and then the rest 2 or 3 poems in English translation. The first one, आज সারাদিন। আজ সারাদিন আমি ভেবে ভেবে তোমাকে কাটাবো। অনেক দূরের থেকে ভেসে আসবে ট্রেনের আওয়াজ। আজ সারাদিন আমি পরিকল্পনা করে কাটাবো পাহাড়ে যাবার। আজ সারাদিন আমি তোমাকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে থাকবো অচেনা সমুদ্র সৈকতে। আজ সারাদিন আমি কাটাবো তোমার সঙ্গে জলপ্রপাতে। আজ সারাদিন শুধু তোমার ঠোঁটের উপর ফেলে রাখবো আমার 2 ঠোঁট। ভাঙা কার্নিশে যেমন অনবধানে পড়ে থাকে দুপুরের রোদ। আজ সারাদিন আমি ভেঙে ভেঙে তোমাকে বোঝাবো প্রতিটি সম্পর্ক থেকে বারবার কেন আমি হয়েছি নিখোঁজ। আজ সারাদিন এক বৃষ্টি ভেজা হাওয়ার মতো তোমার চিবুক ছুঁয়ে বয়ে যাব পাশের বাড়িতে, যেখানে নুপুর সেন স্নানের আগে ফুলের মতন ওঠে ফুটে। আজ সারাদিন আর কিছুই করব না, শুধু তোমাকে আমাতে মুখোমুখি চেয়ে থাকবো একটু দূরত্ব রেখে। আর ভাববো এমন সুযোগ বলো জীবনে আর কদিনই বা আসে। My next poem, Blind Scott.
of chalk clay in hand, a blind man was trying to draw God on the pavement. With a beggar boy watching him closely, as soon as the drawing was finished, the boy shouted, "Where is God?" This is the face of Almighty. Erasing the face, the blind started drawing again. The second time, as he was done, the boy broke into laughter. "You are wrong again. This is the face of Jesus." Wiping it out swiftly, the blind again started creating God. In this manner, every time the blind tried to draw God, it became the face of someone else. And the boy, on this pretext, went on rejecting God. Tired of drawing the wrong picture the whole day, the blind at last ended up drawing his own face and made the eyes visionless. The boy applauded. This is how God looks. My next poem, The Rhino's Cape. The rhino hid inside the file, only to jump out one day to sit down on every chair available in the office. One day, as I came to office, I saw a rhino sitting on my designated chair. Overcoming my initial surprise, I realized he looked quite a lot like me. As he worked with my papers, terrified, I ran into boss's chamber only to find a rhino looking exactly like the boss, rocking on the revolving chair. When the secretary, Miss Sanyal's antechamber turned out to be the same, I got totally puzzled. How did the office turn into a wildlife sanctuary? Back home, the same scene unfolded. A rhino looking exactly like my wife was making tea. I felt a disquiet. In this game sanctuary, will I then become a poacher? Under the thick skin, I cannot make out the real persons. My last poem, A Family Chair. I have inherited very little, but the most striking is a chair, an unbelievable one. Whoever sits on this take on an identical look. My grandfather used to sit on this chair, then my father. He used to look exactly like my grandfather. So that I don't resemble my father, I almost always avoided the chair. I have met strangers sit on the chair and they all started looking similar. I have met friends sit, even the relatives could not be differentiated. Seeing my wife sitting on it, some of my friends' wives also wanted to use it, and at that point I hid the chair. I strongly believe if all the gods were made to sit on that chair, they all would look identical. Even so, with religion, there would have been no discord. This chair is no peacock throne, a simple teakwood chair. If one has no confidence on oneself, sitting on the chair, you could find out who exactly you are. Sitting on this chair, whom do you exactly resemble? Thank you. तो ये थे हमारे अंतिम कवि इस सत्र के, और आपने देखा कि how beautifully the fragrance of languages, of different languages, came forward to make a kind of a bouquet of literature.
That is what Sahitya Academy does. And since we have some time, I would like to recite a very short piece of Draupadi, which is my Khandakavya, and just a small portion of that, not more than 4 or 5 minutes normally, because I am always scared that poetry should not be very long, becomes monotonous as well. And I sing. जिस मानक की तुला पे बहुधा मुझको तोला जाता है. This is Draupadi while dying. She invokes Krishna, of course, during the phase of delirium. Whether she got Krishna in front of her or not, she doesn't know. But then she starts speaking to him. उनके बाल सखा थे, सोलमेट थे, उनसे बात कर रही है. जिस मानक की तुला पे बहुधा मुझको तोला जाता है, उस मानक का कोई बिंदु क्या उनके हिस्से आता है. जो बहुधा कहते अपने को राजवंश के अधिकारी, उनसे पूछो उनको पता क्या उनका कौन सृजनकारी. किस साधक और किन देवों के वीर से उनका हुआ निषेचन. कह सकते क्या उनमें कोई कौन पिता के कौन निवेदन. कर्ण तो फिर भी मरते दम अपना पक्ष निभाया, किसी प्रलोभन से उसका विश्वास न डिगने पाया. उसने वही चुना जिसने उसे महत्ता दी थी, छल उपेक्षा के बदले थोड़ी सी सत्ता दी थी. और कभी जो कुंठा समुदाय की व्यक्ति को दोषी ठहराती, तत्क्षण उसके आहत मन में क्रोध की बदली गहराती. और समय के साथ यदि अधिकारों सत्ता पा जाए, याद रहे समुदाय पे अपना दर्प लिए वह चढ़ आए. यही था कारण दुर्योधन और कर्ण के चयनित धामों का. यही था कारण दुर्योधन और कर्ण के चयनित धामों का. ईर्ष्या द्वेष से रचे गए कुछ चरम कुटिल परिणामों का. यह कैसा युद्ध था वासुदेव जो दे गया है केवल खेद. साम्राज्य यह कैसा जिस घर में छाया हो हर पल निर्वेद. युद्ध ये कैसा जो नारी के मत्थे सब मर जाए. सारी कुरीत सारे कलंक नारी के हिस्से आए. मैं नहीं तुम्हारी फरियादी जो मांगे तुमसे जीवन, मैं तो केवल दिखा रही हूँ तुम पुरुषों को दर्पण. नारी को धारण करने की तुमको कला न आई, प्रेम नारी का पाने को की जीवन भर चतुराई. तुम सब में देखा है मैंने स्वार्थ भरे पुरुष का रूप. प्यासे को ललचाने वाला जैसे हो एक शापित कूप. जैसे मैं कोई जीव नहीं सदियों से पलती बीड़ा हूँ. अंत न हो जिसका कोई वह नर्तन करती पीड़ा हूँ. पहले दिन से ही इच्छाएं मुझे छोड़कर चली गई. पहले दिन से ही इच्छाएं मुझे छोड़कर चली गई. कहकर कि तू ऐ द्रौपदी अनजाने ही चली गई. सहवासों की लड़ियों में मैं बंधी रही इतनी गुरुतर. समझ न आया क्या मैं केवल मनोरंजन को थी सहचर. मुझे ब्याह तारक संग में सबने रास रचाया, और उनके सम्मान में मैंने सबको गले लगाया. उस दिन भी तो भंग हुए थे धर्म के कोमल रेशे. प्रणय निवेदन पर उल्फी के अर्जुन झुक गए जैसे. फिर तो जैसे मुक्त हो गया सब कुछ धर्म के बंधन से. धुला प्रतिज्ञा का चंदन भी रति लीला के चुम्बन से. चित्रांगदा और सुभद्रा सबको वर्ण किया इसने.
राह ताकती रही द्रौपदी, भरे प्रेम अपने उर में, भरे प्रेम अपने उर में। नारी की अतिक्रांत देह से पौरुष जिनका बढ़ता है, नारी की अतिक्रांत देह से पौरुष जिनका बढ़ता है। ऐसे पुरुषों का समाज ही पैतृकता को गढ़ता है, पैतृकता को गढ़ता है। ऐसे पुरुषों का समाज ही पैतृकता को गढ़ता है। यह अटल छात्रावृत्ति से आप सबका हमारे मंच पर जो हमारे सहभागी कवि रहे हैं उनकी सुंदर कविताओं के लिए, और आप सब इतने मनोयोग से सुनते रहे हम लोगों को। I really thank from the core of heart that you all participated in each and every feeling and emotion which we sang, and each and every feeling and emotion of humanity we shared with you, we wanted to share with you. Thank you very much, and thank you Sahitya Akademi for giving us this opportunity. Thank you all the poets, and let's have a picture. Somebody may take a picture of all of us. Thank you very much. We break for recess now. We will assemble again for a speech of program that will be chaired by eminent poet K. Srila. Thank you. और क्या सुंदर हो बैटरी लगाने चला गया था भाई, बैटरी डिश हो गई थी इसकी। एक्चुअली वो भैया ना बाहर है, वो दिखेगी तो मैं आपको बता दूंगा, बाहर ही है। आप प्यार करेंगे ये लो मेरे दोस्त नहीं